कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। दिखा रहा है वहां पर आयोजन को करके यहाँ की सॉइल पे। तो आपने इस यात्रा को कैसे लिया और क्या आपको लगता है कि इस यात्रा से जिस तरह से उन्होंने कमिटमेंट दिखाया एससीओ को लेकर, बायलैटरल टॉक्स को लेकर भी कोई संभावना बन सकती है? क्योंकि ये बातें ऐसे समय में हो रही जब भारत में आज टेरर अटैक भी हुआ है। We'll take a few questions together. Yeah. सर हाय, दिस इज शिवांगी ठाकुर फ्रॉम जी न्यूज। आज हमने देखा किस तरह से एससीओ समिट हुआ, लेकिन इसके बाद सर जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं उनका एक बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि आतंकवाद पर भारत और पाकिस्तान को साथ मिलकर बैठकर बातचीत करना चाहिए क्योंकि हम भी इससे पीड़ित हैं। ऐसे में जब वो यहाँ पर आए हैं, द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई है, राजौरी में आज भी हमारे जवान शहीद हुए हैं, तो कैसे देखते हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि सिंपल सी चीज है, वो कह रहे हैं आतंकवाद पे हम दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन कैसे करेंगे जब आप समिट में आकर बातचीत नहीं करते? Siddhant. Hi, sir. Siddhant from Beyond. When it comes to bilateral with the Chinese foreign minister, the Chinese readout says that situation at the border is stable. How do you see this divergence in the position? Between the Chinese side claiming that everything is normal at the border, everything is stable at the border. Yeah, ma'am, there. Yeah. Hello, my name is Munize Jahangir. I'm from Pakistan, from Aaj TV, and my question to you over here is that the Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari made a bold move by coming here, and it is being seen as a breakthrough. He is also being criticized, but how do you, India, see it? Do you see it as a breakthrough, and what will be your roadmap in the future to resumption of at least diplomatic ties with Pakistan? So, for questions, I'll hand over to you, sir. देखिए, 3 सवाल जो हैं वो पाकिस्तान पर थे, एक सवाल जो है वो चाइना पर था। तो ये 3 सवाल जो पाकिस्तान वाले सवाल जो हैं मैं एक साथ लेना चाहूँगा ताकि बिकॉज दे आर ओवरलैपिंग क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी से दिस, एज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ एन एससीओ मेंबर स्टेट, मिस्टर भुट्टो जरदारी was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. So let me come to the specifics. On the China-Pakistan economic corridor, this so-called corridor, I think it was made very clear, not once but twice in the SCO meeting, that connectivity is good for progress, but connectivity cannot violate the territorial integrity and sovereignty of states. So this has been our long-standing position. Nobody should have any doubt about it. And I assure you, those who are in the room today had no doubt about it. I made sure of that. Regarding आपका दूसरा जो था वो G20 के बारे में था. Now, you know, I don't think there is a G20 issue to debate with anybody. Certainly not with a country which is nothing to do with the G20. I mean, Jammu and Kashmir was, is, will always be a part of India. And the G20 meetings are held in all the Indian states and union territories, so it is completely natural that it is held there. जो आपका जो दूसरा सवाल जो था कि from what I understood that India and Pakistan should sit together. You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Victims of terrorism defend themselves, counter acts of terrorism, they call it out, they delegitimize it, and that is exactly what is happening. So to come here and preach these hypocritical words as though we are on the same boat, I mean, they are committing acts of terrorism. And you know, I don't want to jump the gun on what happened today, but I think we're all feeling equally outraged. So I think, I mean, let's be very, very clear on this. You know, on this matter,
the terrorism matter. I mean, जयशंकर, would भारतीय say- वजीर खारजा की मीडिया से गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय वजीर खारजा की पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सबोताज करने की कोशिश की। खबरों का सिलसिला जारी।